In the heart of India, in the region of Vidarbha, lies one of several hundreds of thousands of villages, Dhanoli. About 100 people are living here, living from what they grow in the fields surrounding the village. It is tough agricultural work. It is a life which turns more and more Indian farmers into slaves of the modern society and economy. Dhanoli is typical for Indian farmers in their fight with global markets, with ecological damage and with themselves, stuck in social structures. This village I found in extreme conditions, apart from rest of the issues, for example, connectivity, agrarian issues and cotton issues and other agriculture and farmer issues. This place is so disconnected from the world because this village is surrounded by the river from three sides and there is no bridge, and that really actually holded me back and compelled me to come here and start work from this place. At the beginning of 2018, the Indian-German Peace Foundation came to Dhanoli with the aim to develop, together with the farmers, alternative income resources and to reduce the market dependency of the farmers. From the economy, there is a serious farmer distress, so we're trying to improve the value chain of the whole raw material that they produce. For example, they do agriculture of mainly cotton here and also wheat and also some linseeds and soya bean and chickpeas. So our objective is to enable farmers to produce final product here so that we can directly connect the farmer not only as a labor but also as an entrepreneur or as a businessman directly to the market. If not directly to the customer, but at least to the retailer directly, so that they can actually make best of their investment and their labor that they put in. Next to the massive tree, in the centre of the village, the Peace Foundation, together with the people of Dhanoli, want to construct a production unit, a step towards their vision of a so-called cotton-to-cloth unit. Since the project has been funded by donations, the inhabitants of Dhanoli are constructing a building for 3 hand-loom machines. With the help of these looms, finished textiles should be woven from cotton yarn produced here, ready for sale. The idea is the production of textiles in an extended local network. The farmers Umesh and Atul are also taking part in the construction project in the centre of the village. They hope to process their own cotton one day with the hand looms, in order to increase their income beyond what they currently get for the raw product at market. ऐसा होता है 3 भाई है, एक भाई वो इधर उधर घूमता रहता, काम के हिसाब से घूमता हो। मैं खेती करता, रहना वहना सब एक जगह है, लेकिन क्या काम खेती का ही करना पड़ता। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते। बताइए। कपास तो यानी समझो हमारा वो बिजनेस ही है, व्यवसाय। खेती कराना बाप दादा भी यही कर रहे थे, बाप ने भी यही किया, दादा ने भी यही किया और हम भी यही कर रहे। अब मानो जून के पहले और लगा ही नहीं सकते हम कपास। जून में बारिश आई तो लगाएंगे, नहीं आई लेट हो गई तो लेट हो जाता। कभी किस साल बारिश एक महीना लेट हो जाए, जून में आने के बजाय अगले महीने आ जाती, तब तक रुकना पड़ता। In Dhanoli's rain-dependent agriculture, cotton is the white gold, the most important crop and income source. However, farmers face more and more often the problems of pests and worms attacking their fields and destroying complete harvests. लेकिन वो हानिकारक है खेती के लिए, तो बहुत हानिकारक। अभी इस साल तो उसमें नया आइटम आ गया, बोंडली करके, वो जो फल लगता है कपास का, उसके अंदर ही कीटक है। अभी वो ऊपर से नहीं खाती थी उसको, वो अंदर से ही गायब करके रखती है। ऐसा अगर उसको बोंड तोड़ेंगे तो ऐसा दिख रहा था कि बहुत अच्छा बोंड है, लेकिन अगर उसको खोल के देखे तो उसमें पूरा उसकी जो सरकी जो है, सरकी बोलती है कपास के अंदर, वो पूरी खा चुकी थी। गुलाबी कलर की, वो गुलाबी
कि नया आइटम आ गया तो साला At the beginning of the 2000s, a seed product from the US company Monsanto was admitted into India. A licensed and genetically modified seed product called BT. It was announced as being tremendously promising, effective against pests, and furthermore, even profit increasing. बीटी को देखो, बीटी में अगर पहले शुरुआत में आई तो उत्पादन बढ़ गया, ज़्यादा अच्छा कपास हो रहा था, ज़्यादा कपास हो रहा था, 2-3 साल में। फिर लोगों ने वही लगाना चालू कर दिया। वो क्या लोग बीज ही वही मिल रहा था बीटी देखते, पेमेंट ही देखते थे कि ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। According to the farmers, BT did not live up to its promise. It was meant to be resistant due to its genetically manipulated structure against many pests which attacked the plant from within. However, over time, farmers needed more and more pesticides and fertilizers for their fields. लागत कम हो जाएगी। बीटी को यानी ऐसा समझो, पहले बताया गया कि बीटी को खाली बढ़ाओ, उसको बाकी कुछ नहीं करना, वो जितनी बढ़ेंगी उतनी बढ़ाओ। तो पहले 1-2 साल में वैसा था, वैसा ही था। Nowadays, farmers are spraying their fields with an increasing amount of these toxic substances. However, paradoxically, these pesticides rarely have any effect, as was the case with this year's harvest. बहुत साइड इफेक्ट है इसके। ऐसे कपास के पास अगर खड़े रहे ना थोड़ी देर, अगर उसको ऐसा थोड़ा सा उठा कर दिया तो पूरा आंख खुजने लगता। And there is another problem. The pests quickly develop a resistance to the toxic pesticides. Going back to the old traditional seeds, which have been passed on from one generation to the other, is, however, extremely tricky. पुराना बीज तो मिलता ही नहीं हमारे इधर। ना अभी बंद हो गया ना पुराना बीज, जब से बीटी आई है। जब से बीटी आई तो पुराना बंद हो गया, फिर लगाएंगे क्या? तो ऑप्शन है कि ना बीटी का। The balance, therefore, has shifted completely. Enormous input costs for seeds and pesticides for the farmers, and at the same time, decreased earnings from the harvest. कपड़ा बेचने जाओ, कपड़ा लेने जाओ मार्केट में तो 500 का एक शर्ट बोलते। कपास बेचने जाओ तो 4,500 में 1 क्विंटल भर ले जाते। कपड़ा भी लेने जाओ तो दुकान में बढ़ जाए। तुअर भी वैसी, मार्केट में लेके गए तो 4,000, 4,500, 3,500 में देते। और तुअर की दाल लेने गए तो साली उसकी तिप्पट चौपट कीमत दुकान में होती है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 150 रुपये थी। Manisha and her colleague work for Umesh. They are harvesting the white gold from his fields. For him, they are important but expensive laborers. आताची कमाई नाही होत जास्त, झालं 10-12 किलो दिवसभराची कमाई, आणि आधीची कमाई होईन झालं 200-300 रुपयाची, अशी नाही होत। मग आता हे कमाई काहीच नाही आहे, नाही कास्तकाराला भेटत, नाही मजुराला भेटत, पण आपल्याला वाटतं एवढी ऊन अंगावर घेते बा, तर काही ना काही आपल्याला भेटले, पण काही ना काही कास्तकाराला भेटले पाहिजे, पण कास्तकार देतच नाही। ह्या 2 किलोसाठी 4 किलोसाठी एवढी ऊन अंगावर घ्या लागते। उद्या आम्ही घरीच राहतो। आम्ही म्हणून राहिलो मालधन्याला मालधनी नाही म्हणते, का करणार आहे आता, ऊन अशी तपते। बेचने में कपास निकालने में मजूर नहीं मिलता, अगर मजूर मिल गया तो भाव बढ़ा कर देना पड़ता, जो किसान हम दे नहीं सकते। फिर मजूर भी बोलते कि नहीं भाव एक नहीं देता दूसरा देता, किसी की खेती अच्छी होती, किसी के मजूर मिल गया तो नहीं मिलता। एकड असतं तर तेवढं उलसं बरं वाटलं, हाय बा ढेकलं हे मातीची माती हे असं वाटलं असतं। आता आपल्या घरी काहीच नाही तर आपल्याला केल्याशिवाय गतंतरच नाही आहे ना, करास लागन ना आपल्याला, आपल्या पोटाला लागते ते करास लागन ना आपल्याला। पोरी आहे 2 पोरी जगवाले काही ना काही करा लागन ना मग। This society, and especially the farmers, are divided. हो, Divided into farmers with land and farmers without land. This is the case in Dhanoli and elsewhere in India. The planned construction area in the village should contribute to lowering the income gap between both groups of farmers.
but only if it is possible to fairly distribute the profits from the textiles sold. And if that is possible, farmers without land will also benefit. The reassembly of the hand-loom machines in the village is led by Rakesh, a young trainer from the next city. He himself has been taught to work with hand-loom machines and in the production of cotton textiles. Today we are constructing the machines, we are reassembling the machines. So it took us for a while, we needed some patience to do that, but I think now we are quite good. We've reached a certain level in the village when you talk about like a psychological change process, and now all the youngsters from the village are coming together and building the machines themselves. In order to protect the machines from the weather, not only from the heat, but also the Indian monsoon, a storage unit is being built next to the tree. With the materials from the next village, Dhanoli's inhabitants are putting the structure up. 3 hand looms and eventually other parts of the cotton to cloth unit will be installed there. The looms will offer new income possibilities and will be used by all of the farmers of Dhanoli, both those with and without land, by men and by women. With the hope for better work and better income, this could possibly help to prevent more and more Indian farmers from leaving the villages. Also, Kishore Datta left the village. He went to Nagpur, a city of millions in central India. He went, tried his luck, and came back. His brother helped him find a job. पानठेली पे काम करता था मैं पानठेली में, तो वहाँ का खर्चा और वो पूराता नहीं था, इसलिए 1-2 साल रहे और फिर गांव चले आए वापस। गुजारा नहीं होता था इसलिए चले आए। अभी गुजारा होता है? हाँ अभी होता है, अभी गांव में क्या है हो जाता है, सिटी में क्या है पूरा किराया भी देना पड़ता है और खाने के लिए भी पैसा लगता। गांव में क्या है किराया नहीं देना पड़ता, सिर्फ खाना और रहना ही रहता है, इसलिए गांव में पूरा था। Nevertheless, Kishore Datta needed money for important expenses. This was the reason he took a loan. सब गांव वालों ने दे दिए, उठाए पैसे, हमको लगा हम भी ले दिए। 400 रुपये 420 रुपये हफ्ता क्या है, 8 दिन में 2 दिन काम पे जाओ तो भी खंड जाता है वो, इसलिए हमने भी उठाए 35,000। Giving credit to farmers is common in India. The majority, however, run up debts with private moneylenders. This is less formal and less complicated than getting a loan from official banks. But these moneylenders have a reputation for high and exploitative interest rates. Pressure is often put upon farmers, particularly when these high interest rates cannot be paid back. नहीं, लड़ाई झगड़ा की नहीं करता वो, लेकिन वो जब तक देते नहीं तब तक वो बैठा ही रहता है, जाता ही नहीं। अच्छा। हाँ, बाकी बोलता नहीं कुछ, लेकिन बैठा रहता है वो, जब तक हम देते नहीं तब तक बैठा रहता है वो, और समाज में उसका बदनामी होता है। हाँ, इसलिए लोग दे देते हैं। Many moneylenders use social exclusion and humiliation as methods to pressurize farmers in debt. ये किसान लोग क्या है वो खेती के लिए कर्जा उठाते हैं और वो साल में फिर कम हो जाता, उसके क्या है अपने बी बयान को कर्जा और अपने बड़े लोगों का कर्जा, ये वो पिकवानी से नील नहीं होता, इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं उसके पेंशन से। नहीं, ऐसी ख्याल तो मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि मैं In the last 20 years,
more than 300,000 farmers have taken their lives. Unbearable debt, social pressure, shame and illnesses being major significant contributors. Vidarbha, the region in which Dhanoli lies, has become known as the epicentre of the suicides. The wives and mothers are often the ones left alone, left to feed their kids and their families. In the village next to Dhanoli, on the other side of the river, lives Sangeeta with her kids. She is one of those left alone by the suicide of her husband. घराचं हे होतं, घराचं म्हणजे कसं करायचं बा, घर बांधायचं आहे, बँकेचे पैसे द्यायचे आहे, कर्ज आहे, कसं करायचं बा, त्यानं आत्महत्या केली. पोरायचं शिक्षण, पोरगं कॅनटमध्ये जाते टरोड्याला, पोराचं शिक्षण. आपल्या पोराचं शिक्षण कसं होईल बा, आपल्या शेतीचं कसं होईल. If she could, Sangeeta says she would like to train on the hand looms, but she can't. If she did come to the training at the machines, like others from the village, she would lose important time to work in the fields. Besides that, she cannot leave her children alone. After the hand loom machines have been reconstructed in Dhanoli, women and men come to learn how to span them with yarn, prepare and use them. Some of them come in their lunch break. Most of them, however, in the evenings, after a whole day of work in the fields around. It is their free time. ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 तो एक पे दो आ जाएंगे. Their daily schedule is so tight. Even if they want, how do they spare themselves from one day of labor and come to a training, for example? And that's very complex. They live in an economic situation where they live hand to mouth. And how do I go and tell somebody that today you don't go to work and you come? One of the aims of the Peace Foundation is to keep up the long-term motivation of the women and men of Dhanoli. सब लोग करो तो सबको आ जाएगा ना. इधर से लेना, इधर से. Located about 30 kilometers away from Dhanoli, at the edge of the city of Vardha, is an ashram. People live and work there following the principles and ideals of Gandhi. It is a place of well-ordered daily routine, of meditation and of renunciation. And at the same time, it is closely connected with the project in Dhanoli. Kishore constructs and reassembles hand looms here. It is thanks to him that the looms were cheaper to get for the farmers of Dhanoli. एक साथी के पहले जब 2010 में मैं गुवाहाटी में सीखने गया था, वहाँ पर बड़े मुश्किल से 5,500 में लूम कंप्लीट लूम मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी सस्ती है, बाम्बू की है और घर में एकदम सहजता से करते हैं. यहाँ का देखा तो 54,000 का एक लूम. तो लगा इतना तो बहुत 10 गुना डिफरेंस है. वही डिफरेंस को कैसे कम किया जा सकता है. तो सोचा कि इसमें घर में क्या क्या पार्ट्स कर सकते हैं. शुरू में तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा बना, पर जैसे जैसे इसमें अनुभव आता गया वैसे उसमें प्रोग्रेस होता गया. Copies of different and otherwise expensive hand loom machines are produced in the ashram. In several villages, Kishore has been trying for years to start projects from which farmers can directly profit, both financially and socially. एक उसमें जो कॉटन से क्लॉथ का जो कंसेप्ट है कंप्लीट, एक तो किसान ने अपनी खादी पहननी चाहिए, क्योंकि वो उगाता है, उसने पहननी चाहिए.
यदि उगाता है तो गांव में ही उसकी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, वो थोड़ा आग्रह था गांधी के जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो यह है उसके आइडिया के अनुसार। फिर जहाँ पर ये खादी बनेगी वहाँ पर ही उसका वितरण होना चाहिए, और वितरण के लिए हमको दिल्ली बम्बई जैसी बड़ी सिटियों का आधार नहीं लेना चाहिए। इस तरह की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में जो यूनिटी की बात है सबसे महत्व की है, जो एक गांव की जो यूनिटी होनी चाहिए, ये मुख्य मकसद को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में इस तरह का ये शुरू किया है। Wearing his self-made clothes, Kishore is producing the individual parts which will make this vision become reality. सबसे महत्व का उसको जो अभी भागदौड़ चल रही है ना पैसे के पीछे, वो कम हो जाएगी, और साल भर काम मिलता है, और कभी कम हुआ ज़्यादा हुआ सब बोलने काम नहीं है, तो कम दौड़ धूप में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा समाधान उसको आराम से मिल सकता है। मार्केट में कपास का रेट बहुत कम होता है, और अपना ही कपास अपना ही कपास होता है, हम ही धागा बनाएंगे, हम ही कपड़ा बनाएंगे, तो काफ़ी प्रॉफिट होगा और अच्छा होगा, और हमारी बहुत आर्थिक मदद हो जाएगी। Seema takes part in nearly every training session at the hand loom machines. She learns at an early stage that processing the raw materials can really increase her income. That is why she successfully completed training as a tailor parallel to her studies. मुझे सिलाई के काम से महीने में 2-3 हज़ार की मदद हो जाती है, क्योंकि खेती का भी काम रहता है ना बीच में, और बच्चों को भी संभालना है, घर के काम काज सब करना पड़ता है, इसलिए 2-3 हज़ार का काम हो जाता है एक महीने में। As soon as the complete cotton to cloth production unit is ready in Dhanoli, Seema hopes to turn her own cotton into textiles. She would then become an important part of the movement in Dhanoli. फर्क ये है कि किसी को मैं जो सीख रही हूँ उससे किसी का फ़ायदा होगा तो मैं पढ़ाऊँगी, और अच्छे से आए किसी को, इतना ही चाहूँगी। जितने में संघर्ष आता है उतना अच्छा ही है, और हमारा अच्छा हुआ। संघर्ष के बाद जो थोड़ा धीरज रखना पड़ता है वो सबसे महत्व का है, पेशेंस वाला। यदि उस समय यदि हम थोड़ा संतुलन बना के रखेंगे तो गाड़ी दिन ब दिन हमारी आगे बढ़ी। मेरा तो सपना यही है कि हम अपनी खुद की ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए, इसलिए हम अभी से जमा करके रखने पड़ेंगे, इसलिए ऐसी बात है मेरी। वैसा कर नहीं सकते, नहीं तो मेरा ये कहना है कि अगर हम खुद का माल खुद उगाए और खुद खाए, बेचे ही नहीं तो देश का क्या होगा, ये सोचना बहुत पहले ज़रूरी बात है।